अस्सलाम वालेकुम जी। ओके जी, प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगी कि we will be reproducing all the requirements of fourth schedule, and then we will be identifying what are the differences with the fifth schedule. So we will be concentrating on fourth schedule, and if there is any difference with the fifth schedule, so that will be discussed only. First of all, fourth schedule is only applicable on listed companies. Other than listed companies, there's only the fifth schedule will be applicable. So here we are with certain additional points. First of all, whenever a company is going to prepare its financial statements, it has to identify its regulatory framework. The third schedule of the Companies Act talk about the regulatory framework, and we divide our, you can say, companies into different types of companies. Some are public interest companies, which are further divided into listed and non-listed companies. And then we have large scale entities, and then we have medium sized, and then we have small sized entities. So we have different types of accounting standards which are applicable on listed or public interest companies and other companies. So there are 3 or 4 sets of accounting standards. One is International Financial Reporting Standards. The other is standards which are issued by the International Accounting Standards Board, which are applicable on in Pakistan medium-sized entities. And then we have certain accounting standards which have been published by Institute of Chartered Accountants of Pakistan, which are applicable on small-sized entities. And then we have additional set of accounting standards for non-profit organizations. So these requirements of fourth and fifth schedule are in addition to the requirements which are given in different types of accounting standards. So whenever we talk about listed companies prepare their financial statements under IFRS and according to the requirements of fourth schedule. The other entities will be preparing their financial statements according to the relevant standards and then the requirements of fifth schedule. So fifth schedule is applicable other than the non-listed, other than the listed companies. Here are some definitions. First one is the capital reserve, and the definitions are given in the fourth schedule, but they are equally applicable on the fifth schedule. So capital reserve includes share premium, reserves created under any other law, and reserves arising on consequences of any scheme of arrangement, profit prior to incorporation, and any other reserve which is not available for distribution will be called as capital reserve. And then there's a definition of executive. That person whose salary, annual salary is 1.2 million, that will be called as executive. Then we have certain journal disclosures. First of all, we will be discussing only the fourth schedule requirement, and then if there is any requirement which is not relevant for the, you can say, other than the companies which are following fourth schedule, that will be only highlighted. Geographical location and address of all business units. Particular of companies' immovable fixed assets, including location and area of land, the capacity of an industrial unit, actual production, and the reason for the shortfall, if there is any, number of persons employed as at the date of financial statement, and average number of employees during the year, names of associated companies or related parties with whom the company had entered into transactions during the year, along with basis of relationship and percentage of shareholding. I think the related parties have been discussed in detail. So the other 4 disclosures are very important. First one is geographical location, means where the company is running any business that is basically relevant. You have to disclose that in the financial statements. And then very important is the capacity disclosure. So you have to provide the capacity, the actual capacity of the installed plant, and then if that there is a shortfall, you have to provide the reason as well. So we will be having certain, you can say, exemplary disclosures as well. So all of the above disclosures are applicable on, you can say, companies other than the listed companies, except point number 2, and that is particular of companies immovable fixed assets. यानी अगर कोई लैंड या बिल्डिंग्स हैं उनके अलावा जो बाकी डिस्क्लोजर्स हैं वो बाकी एंट्रीज के ऊपर भी एप्लीकेबल है. And here is a disclosure which is for, you can say, companies immovable assets, and then
we have the disclosure of production capacity. So and then number of employees, you have to give average number and the total number. Okay, then any transactions outside Pakistan. If a company is, you can say, making any transaction outside Pakistan, so there are certain disclosures: the name of the undertaking, registered address, and the country of incorporation, basis of association, aggregate percentage of shareholding, name of chief executive officer or principal officer or authorized agent, operational status, and auditor's opinion on the latest financial statement. In fifth schedule, only first one is applicable: the name of the undertaking, registered address, and country of incorporation. The other five disclosures are not applicable on companies which are which are preparing financial statements under fifth schedule. Here is a disclosure. We just, you can say, produce certain examples just to have the idea what can be the disclosure under these, you can say, fourth and fifth schedules. And then credit facilities and penalties. Fourth schedule: nature of any credit facilities available to the company under any contract and not availed at the year end, and any penalty on company shall be disclosed in the annual report. Any change in such penalty as a result of any appeal, the fact of any change shall be disclosed in the annual report. Above disclosures are not required under the fifth schedule. And then loans, advances, investments in foreign companies. In case where the company has given loans or advances or made investments in foreign companies, following disclosures are required: name of the company along with jurisdiction, name and address of the owner of the interest of the investee, amount involved, terms, conditions, and period, amount of return, detail of all litigation against the investee, any default relating to foreign loan or investments, and gain or loss in case of disposal. Only first one is applicable under the fifth schedule: the name of the company along with the jurisdiction. The other disclosures are applicable for listed companies only. And then export sales. In case where the company has made export sales, following disclosures are required in respect of outstanding trade debts: amount of export sale made in each foreign jurisdiction, name of company in case of related party. If that is a related party, you have to also disclose under the related party disclosure as well. Name of defaulting party, relationship if any, and default amount, and description of any legal action taken against the defaulting parties. Uh, Fifth schedule is not requiring any of the disclosures which are mentioned above. And here is a disclosure: the jurisdiction, the country, then export during the year, gross trade receivables, confirmed LCs, contract amount, default amount, name of the defaulting parties, and legal action if taken, that will be disclosed. And then for Sharia compliant companies only, Sharia compliant companies and the companies listed on Islamic index shall disclose loans, advances obtained as per Sharia or Islamic mode, Sharia compliant bank deposit oblique bank balances, profit earned from Sharia compliant bank deposit oblique bank balances, revenue earned from a Sharia compliant business segment, gain or loss on or dividend earned from Sharia compliant investments, markup paid on Islamic mode of financing, profit earned or interest paid on any conventional loan or advance. Fifth schedule is not requiring any of the disclosure because normally the Sharia compliant companies are listed companies which are listed on Pakistan Stock Exchange KMI index. So these are only required from the listed companies. Here is a disclosure. Let's say the type of the loan is diminishing musharaka, and then you have taken diminishing musharaka facility from different banks. You have to give the name of the bank, the interest rate or the profit rate, security, repayment terms, and then the balance is outstanding at the year end. And if there is any income arising on the deposits with the
Islamic banks in Sharia mode that has to be disclosed, markup on deposits, dividend income, exchange gain. Okay, then we are having certain other disclosures, summary of significant transactions and events that have affected the company's financial position and performance during the year. In financial statement issued after initial or secondary public offering of securities or debt instruments, implementation of plan as disclosed in the offering document with regard to utilization of proceeds raised shall be disclosed. Normally, listed companies raise funds publicly, so there is a utilization plan as well. They have to disclose that as well, what amount, up to what amount they have utilized, whether they have achieved the targets or not. That has also to be disclosed, but these are not applicable. One is only applicable for fifth schedule. The two is not applicable. And then there are certain requirements for statement of financial position. Fourth schedule is requiring regarding the revaluation items to be disclosed in a separate line item. There should be a separate line on the face of the balance sheet. Revaluation surplus on property, plant and equipment, long-term deposits and prepayments, unpaid dividends, unclaimed dividends, and cash and bank balances. Fifth schedule, all above disclosures are also applicable under the fifth schedule. But keep in mind, these are in addition to the line items required under IS1. So IS1 is also requiring the line items which must be on the face, and also allowing certain items to be disclosed in the on the face or in the notes. But these are the requirements under fourth and fifth schedule. They must be, you can say, on the face of the balance sheet. And then we have non-current assets, where any asset acquired with the funds of the company but is not in the name of the company or is not in the possession of the company. This fact along with the reason shall be stated, and description and value of the asset, the person in whose name and present possession it is held shall be disclosed. Land and building shall be distinguished between freehold and leasehold. Post sale value shall be disclosed separately in the case of revaluation of property, plant and equipment or investment property. All above disclosure are also applicable under the fifth schedule. Here is an example of the disclosure. You have to give the description of the asset, and then classified as what, and then particulars of the person, and the note under which that asset is being, you can say, presented in the financial statement, and value of the property. In case of revaluation, you have to give certain additional disclosure in the financial statements. And then fixed assets continues. In the case of sale of fixed asset, if the aggregate book value of the asset exceeds 500,000 rupees, following disclosure or particulars shall be disclosed. Cost or revalued amount, book value, the sale price, and the mode of disposal, the particulars of the purchaser, gain or loss, the relationship with the company or any of its directors. Fifth schedule, all above disclosure are also applicable for fifth schedule. And here is an example of the disclosure. Particulars of the asset classified as cost oblique revalued amount, accumulated depreciation, book value, sale proceeds, gain or loss, mode of disposal, particulars of buyer, and relationship with the company, if any, if there is any related party disclosure that has to be disclosed. And then long-term investments in associated companies or undertakings have been made in accordance with the requirements under the Act under the authority of special resolution. We shall indicate the nature, period, and amount of investment and terms and conditions attached thereto. All above disclosures are also applicable under the fifth schedule. And then long-term loans and advances to directors. Fourth schedule, with regard to loans and advances to directors, following shall be disclosed. Loans and advances have been made in compliance with the requirements of Section 182 of the Companies Act. As per Section 182, no company shall provide loan to a director unless approved through resolution by the members of the company. Provided further, in case of listed company, approval of the commission shall also be required. It is basically the requirement of Section 182 that whenever a loan is given to the directors, these procedures or these you can say requirements should be fulfilled. The purpose for which the loans or advances are made
Reconciliation of the carrying amount means opening balance during the year change and then the closing balance. Point number 3 is not applicable for fifth schedule. Previously, there was no resolution required, but now resolution is required even from the private limited companies as well. Here is the, you can say, example of the disclosure. The board of directors has adopted a policy that there should be no loan to director except for loans to fund expenditure to defend director in legal or regulatory proceedings. The loan provider, yeah, just you can say the reason for the loan is being given, and then a reconciliation of the opening balance during their changes and then the closing balance. Long-term loan advances to associates and related parties. In respect of loans advances to associates and related parties, they shall be disclosed. These are in addition to IS 24. The name of each associate and related party, the term of the loan advances, the particular of collateral security held, the maximum aggregate amount outstanding at any time during the year calculated by reference to month-end balance, provision for doubtful debts, and loans and advances written off during the year. Fifth schedule, the disclosures are required only in case of loans and advances to associate for fifth schedule. Associates and related parties, but under the fifth schedule only requirement is for the associates. Then we have current assets. Trade debts or receivables from associates and related parties. In respect of debts receivable from associates and related parties, there shall be disclosed the name, the same, you can say the amount, the same disclosure which were from the, you can say, related party or associated required in case of loans and advances. The same are required under the heading of trade debts and receivables. Again, under fifth schedule, loans, not loans and advances, trade debts from the associated or to the associated companies are required. I think there is a typing error. Okay, the same disclosure, name of the related party, gross amount, past amount due, provision for expected credit loss, reversal of provision for expected credit loss, amount due, written off, net amount, maximum amount outstanding at any time during the year. Now, as the IFRS 9 is applicable, so the impairment loss or the provisions are required to be calculated under IFRS 9 ECL modeling. Reversal of provision for expected credit loss, if there is any reversal, that has to be disclosed as well. And then other disclosures in respect of loans advances other than those to suppliers shall be disclosed separately if the loan or loans or advances exceed rupees 1 million, the name of the borrower, term of the repayment, and particulars of any collateral or security held, provision made for doubtful debts. And under fifth schedule, only point 2 is applicable. Point 1 is not applicable. Share capital and reserves. Under fourth schedule, in respect of issued share capital of a company, following shall be disclosed separately: shares allotted for consideration paid in cash, shares allotted for consideration other than cash, shares allotted as bonus shares, or if there is any buyback of share capital, then treasury share capital shall also be disclosed separately. Discount on issue of shares shall be shown separately as a deduction from share capital. Fifth schedule, above disclosure, same disclosures are required under fifth schedule as well. Here is an example of the disclosure. Ordinary shares, fully paid in cash, fully paid other than cash, allotted as bonus. Treasury shares, if any, they will be shown as a deduction from the share capital. And if there is any discount, that has to be deducted as well. And then fully paid other than cash, shares against property, shares against any other than property, that will be disclosed. And then capital and revenue reserve. Fourth schedule requirement, capital and revenue reserve shall be clearly distinguished. Any legal or other restrictions to distribute shall be disclosed for all kind of reserve maintained by the company. Capital reserve we defined in the, you can say, first 2 or 3 slides. So there should be a classification in the capital reserve and the revenue reserve separately. The above disclosures are also applicable on other than listed companies. Then we have
disclosure required for non-current liabilities payable to associates and related parties. Amount due to associate companies and related parties shall be disclosed separately. Above disclosure is also applicable under fifth schedule. Then we have current liabilities. Items to be disclosed as a separate line item. They are required on the face of the balance sheet. Payable to Provident Fund, contributory pension fund or contributory retirement fund, deposits, accrued liabilities and advances, loans from banking companies and other financial institutions other than the related parties, loans and advances from related parties including sponsors, directors along with purpose and utilization of the amount. Loans and advances shall be classified as secured and unsecured. Under fifth schedule, the requirements are the same. Then contributory funds. In case of Provident Fund, contributory pension fund or contributory retirement fund, a statement of investment out of fund have been made in accordance with the provisions of section 218 of the Act, which requires that all contributions shall either be deposited in national savings schemes, special account in a scheduled bank, or be invested in government securities, bonds, redeemable capital, debt securities, or instruments issued by the statutory bodies. The above disclosures are also applicable under the fifth schedule. And then security deposits. In respect of security deposits payable, following shall be disclosed: bifurcation of amount received as security deposit into amounts utilizable for company, businesses, and others. Amount utilized for the purpose of business in accordance with section 217 of the Act, which requires that no company shall utilize security deposit except in accordance with the contract in writing, and amount kept in a separate bank account. It's a very important point. And in case of security deposits, you all should always check that whether this requirement is fulfilled or not, but normally is not. So you have to be very careful. And then contingencies and commitments in respect of legal proceedings include name of the court, agency, or authority in which the proceedings are pending, the date instituted, the principal parties, description of the factual basis of the proceedings, and fifth schedule also requires the above disclosures. And then we are having with the statement of profit or loss account. Revenue. Following items shall be disclosed as deduction from turnover as separate line item. Trade discounts, sales and other taxes directly attributable to sales. It means you have to present first the gross sales, and then you have to provide line items for trade discounts and sales taxes and any other taxes applicable on the sales. These disclosures are also applicable under the fifth schedule. And then auditors remuneration, the aggregate amount of auditors remuneration showing separately fees, expenses, other remuneration for services rendered as auditors, services rendered in any other capacity, stating the nature of other services. In case of joint auditor, the aforesaid information shall be shown separately for each type of joint auditor. Fifth schedule, above disclosure is also applicable under the fifth schedule. So here is the auditor's remuneration disclosure: audit services, annual audit, or there is any, you can say, interim, that should also be disclosed, out of pocket charges, and if any non-audit services are provided, that should also be provided in the financial statements. And then donations to a single party exceeding rupees 500,000, name of the donee shall be disclosed. Where any director or his spouse has interest in the donee, irrespective of the amount, names of such directors along with their interest shall be disclosed. Fifth schedule, above disclosure is also applicable under the fifth schedule, and here is the example: donation exceeding rupees 500,000, ABC Foundation XYZ Trust, and then donations in which directors have interest, वो भी आपने अलग से disclose कर देना. And then amount charged for executives and directors, remuneration of executives and directors, particulars of aggregate amount charged by the company shall be disclosed for directors, chief executives together with the number of such directors and executives, fees, managerial remuneration, commission or bonus indicating the nature, reimbursable expenses. Here one of the questions being asked in the previous you can say presentation, bonuses. So you have to give the nature of the bonus.
why the bonus is being given to the executives. Reimbursable expenses, pension, gratuities, company's contribution to any funds, other perquisites and benefits. Fifth schedule is also requiring the same information. Here is the disclosure. The aggregate amount charged in the financial statement for the year for remuneration, including certain benefits to the chief executive and full-time working directors of the company, will be as follows. Okay, then we have royalty paid, if any. In case of royalty paid to companies, entities, individuals, following shall be disclosed: name and registered address, relationship with the company or director, if any. Fifth schedule also requires the above disclosure, and the disclosure will be like this: ABC company, relationship, registered address, and then the amount paid as royalty will be disclosed. Okay. Today was basically the you can say an easy one. Normally मेरी presentation यहाँ जो है वो किसी IFRS पे होती है, तो आज जो था वो मेरे लिए बड़ा आसान था जी. जी, any question you have जी, please. जी. चेकलिस्ट जो है वो आईकैप ने भी वैसे बनाई हुई है. वो पुरानी होगी अभी, तो इसमें सर्टेन चेंजेस हुए, अपडेट हुई है तो शेयर कर दो. लेटेस्ट अवेलेबल होगी है जी. मेरे ख्याल फरवरी में चेंजेस आई थी लेटेस्ट इसके ऊपर. ये वैसे जो हमने प्रेजेंटेशन बनाई है अप टू फरवरी बना दी है, जो फरवरी तक चेंजेस आई. सर अगर हम कोई भी इस्लामिक स्टैंडर्ड कंप्लाई कर रहे हैं, सॉरी, इस्लामिक स्टैंडर्ड कंप्लाई जी 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 जी, और उसका क्या हमें स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस में रेफरेंस कोड करना चाहिए? स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस में? जी सर. देखिए, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस में आपको रेफरेंस तो देना चाहिए. देखिए, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ना, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है उसको आपको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करना चाहिए. और अगर देखें तो जो इस्लामिक स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रिक्वायर करता है. यू हैव टू, अगर वैसे आप अगर ओवरऑल भी इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल ऑन सच टाइप ऑफ कंपनी, तो उसमें कवर तो हो जाता है अगर आप उसकी लाइन आइटम ना भी या ना भी रेफरेंस देना चाहें तो. बट दे दे तो ज़्यादा बेहतर है. और नॉर्मली हमने देखा कि वैसे हम देते हैं, डिस्क्लोजर प्रोवाइड करते हैं हम. अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आईकैप का जो TR32 है जिस पे पहले डिस्कशन भी हुई है, उसमें अंडर सम सर्कमस्टांसेस हम इक्विटी में भी लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स को लेके जा सकते हैं. लेकिन जब हम देखते हैं तो कंपनीज एक्ट में ऐसी कोई बाइफर्केशन, ऐसी कोई कैटेगराइजेशन नहीं दी हुई. तो पाकिस्तान में रहते हुए ऑब्वियसली कंपनीज एक्ट ही ओवर रूल करता है दूसरी चीजों को, तो ये क्या ये वायलेशन या कोई कंट्रावेंशन? नहीं, कतन नहीं है. बेसिकली जो भी आप कह लें जो रेगुलेशंस होती हैं ना, वो कंपनीज एक्ट में अडॉप्ट की जाती हैं. ठीक है ना. जैसे फर्ज करें अगर TR32 की भी हम बात करें ना, तो TR32 भी रेफर करती है जो डेफिनेशन ऑफ इक्विटी और फाइनेंशियल लायबिलिटी गिवन है अंडर IS 32. यानी TR32 को इंडिपेंडेंट चीज नहीं है, उसने तो सिर्फ क्वेरी का आंसर दिया है एक तरह का. वरना अगर आप देखें तो IS 32 जो है वो क्लियरली एस्टेब्लिश करता है कि इक्विटी क्या है और डेट क्या है. और जाहिर है कि अगर डायरेक्टर से कोई लोन है वो इंटरेस्ट फ्री है और उसकी कोई जो है वो टर्म भी नहीं है और वो एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी पेएबल है, तो बेसिकली वो डेफिनेशन ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को मीट कर जाता है. तो यही जो है वो TR32 में भी उन्होंने प्रोवाइड किया है. तो ये कोई अलग से रेगुलेशन नहीं है. वैसे ये जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग दी गई है कि आपने डायरेक्टर्स लोन को जो है वो इक्विटी के तौर पे क्लासिफाई करना है या लायबिलिटी के तौर पे क्लासिफाई करना है. बेसिकली तो आप IS 32 को फॉलो कर रहे हैं, और IS 32 जो है वो फुली कवर्ड है अंडर द कंपनीज एक्ट. जब आपने उसको अडॉप्ट कर लिया तो ऑटोमेटिकली आप उसी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं. इट्स नॉट ए न्यू रेगुलेशन. जो TR32 है वो नई रेगुलेशन नहीं है. दे जस्ट आइडेंटिफाइड के जो डायरेक्टर्स का लोन है, आया वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है या इक्विटी है. तो अगर डायरेक्टर्स का लोन है, इवन अगर उसके ऊपर कोई मार्कअप नहीं भी है, बट उसकी टर्म है कितनी देर बाद वापस करना है और वो एट द डायरेक्टर्स ऑप्शन है, तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी की डेफिनेशन में चली जाती है. और अगर आप TR32 को पढ़ें तो वो एग्जैक्टली उसकी रिक्वायरमेंट वही कर रहा है जो IFRS 9 रिक्वायर करता है फॉर फाइनेंशियल लायबिलिटीज. कि आप उसको फेयर वैल्यू पर रिकॉग्नाइज करें, यानी मार्केट रेट से डिस्काउंट करें, उसके ऊपर अनवाइंडिंग चार्ज करें, तो दैट इज द सेम रिक्वायरमेंट. तो नई चीज नहीं है. Other offices, Multan and Faisalabad. एडवांस फॉर परचेज ऑफ लैंड या CWP के लिए जो एडवांसेस होते हैं,
नॉर्मली वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, 3-4 महीने सर बाद वो अगर दोबारा मैंने ना, एडवांस फॉर परचेज ऑफ लैंड जी जी या सीडब्ल्यूपी के लिए जो एडवांसेस होते हैं हाँ कॉन्ट्रैक्टर्स जी। को, वो नॉर्मली शॉर्ट टर्म होते हैं, 3-4 महीने में वो एसेट बन जाते हैं। जी जी तो उसको लॉन्ग टर्म डिपॉजिट एंड प्री पेमेंट्स में हमें डिस्क्लोज करना चाहिए या प्रॉपर्टी प्लानिंग रिक्वायरमेंट में? देखें, मसला ये कि मैं देखें, अगर आपने एडवांस दे दिया नॉन करंट एसेट के लिए, तो बेसिकली उसके अगेंस्ट आपको डिलीवर क्या होना है? एसेट ही आने से एसेट कौन सा डिलीवर होना है? नॉन करंट जी एसेट कौन सा डिलीवर होना है? नॉन करंट। देखें, उसकी रिकवरेबिलिटी नहीं है 2-3 महीने में, उसकी कन्वर्जन है। जी जी ठीक है सर। हाँ, जी जी तो नॉन करंट में जाएगा। लॉन्ग टर्म में जाएगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट भी नहीं है, प्री पेमेंट भी नहीं है। लॉन्ग टर्म में तो जाएगा सर, लेकिन वो हाँ। न लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स है न लॉन्ग टर्म प्री पेमेंट है। मेरा अपना ख्याल ये कि वो लॉन्ग टर्म एडवांस में जाना चाहिए, यानी एडवांसेस के अंदर उसको डालना चाहिए। डिपॉजिट मे बी, बट आई थिंक मोर अप्रोप्रिएट वर्ड इज एडवांस, दैट इज एडवांस फॉर द नॉन करंट एसेट। नहीं, सीडब्ल्यूबी के सवाल है कि उसको नॉर्मली हम क्या करते हैं प्रैक्टिकली कि हम उसको सीडब्ल्यूबी में शो कर देते हैं हेडिंग देके कि एडवांसेस, लेकिन वो आई के फिर ऑब्जेक्शन करता है कि नहीं, कंपनी लॉ में लिखा है कि लॉन्ग टर्म एडवांस। हेडिंग तो आप यही यूज करेंगे ना। देखें, वो CWIP भी नहीं है। अगर CWIP का जो डेफिनेशन पे जाएंगे तो CWIP तो नहीं है ना। लेकिन वो शॉर्टली कन्वर्ट असल में वो एसिड बन जाता है शॉर्टली। देखिए, लैंड CWIP में कब जब जाएगी, जब उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे ना आप, ऐसे तो नहीं करेंगे ना। क्या ख्याल है? मेरा अपना ख्याल ये है कि उसको CWIP में नहीं डालना चाहिए जो आपने लॉन्ग टर्म एडवांस दी है, उसको आप एडवांस में लिखें। जी 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 एक होता सर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वाला पॉइंट था, उसमें लिखा था इंडस्ट्रियल यूनिट, कि वो इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए वो रिक्वायरमेंट है। तो जो सर्विस सेक्टर है उनके लिए भी यही रिक्वायरमेंट है, सर्विस सेक्टर जिस तरह स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, होटल्स? नहीं नहीं, उनके लिए रिक्वायरमेंट, ये इंडस्ट्रीज के लिए रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्शन कैपेसिटी की। सर इंडस्ट्रियल यूनिट जो कैपेसिटी है सर, उसकी यूटिलाइजेशन के हवाले से मेरा सवाल है सर। अगर हम कैपेसिटी, वो तो एक ओपन एंडेड होती है अक्सर मशीनरी की, अगर हम कैपेसिटी देखें उसको पिन एक पॉइंट प्लेटेड कैपेसिटी भी तो होती है ना जी, एक प्लेटेड कैपेसिटी होती है। मसला ये कि वो प्लेटेड कैपेसिटी की बात हो रही है ना। हमने तो प्रैक्टिकली ऐसे भी देखा है कि प्लेटेड कैपेसिटी से लोग ज्यादा भी ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो आपके पास तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप तो प्लेटेड कैपेसिटी लिखेंगे ना, ये इसकी प्लेटेड कैपेसिटी इतनी है एक्चुअल जो। तो अगर उसमें एक्चुअल कैपेसिटी एक्सीड कर रही हो, प्रॉब्लम है, एम्बिग्युइटी नहीं नजर प्रॉब्लम आएगी? है, यस इट इज ए प्रॉब्लम। और नॉर्मली बहुत सारी इंडस्ट्रीज में होता है, आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है कि आपने एक्सटेंशन करनी है कि नहीं करनी है। तो हमारे यहाँ नॉर्मली ये एक प्रॉब्लम है कि आपकी जो एक्चुअल कैपेसिटी होती है वो आपकी रेटेड कैपेसिटी से बढ़ जाती है, और उससे एक एम्बिग्युइटी आती है कि इन्होंने अनऑथराइज जो है वो एक्सटेंशंस कर ली हैं। ठीक है ना। तो इसके ऊपर जो है वो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन जरूरी होती है ड्यूरिंग ऑडिट, कि आप उनसे लें कि आया ये प्लेटेड कैपेसिटी से जो इंक्रीज आ रही है उसकी रीजन क्या है। जी जी सर। अस्सलाम सर। अच्छा सर, एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि आपको पता है कि हम ग्रुप स्ट्रक्चर्स में नॉर्मली पाकिस्तान में काम करते हैं, और ऐसा होता है कि एक मैन्युफैक्चरर है और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर है उसी का ना, और उनके ट्रांजैक्शंस आपस में चल रही हैं, बीइंग रिलेटेड पार्टी, जैसे भी अदनान भाई ने डिस्कस किया। तो इसमें मेरा पॉइंट ये है कि जो ECL का कॉन्सेप्ट है, अब ज़ाहिर है वो हमारा जो प्रिवेलिंग का कॉन्सेप्ट है वो तो ख़त्म होगी ना, वो वाली कहानी। अब जो ECL का कॉन्सेप्ट है, जब मेरी रिलेटेड पार्टी है और मेरी ट्रांजेक्शन चल भी रही हैं और मुझे सर्टेन है कि वो नॉर्मल कोर्स में मुझे वापस भी आना है, सारा कुछ होना है, तो फिर मुझे जो बात समझ आती है ECL कहाँ पे आएगा? वो तो फिर दायरा है, मुझे पेमेंट आ जानी है उसकी अल्टीमेटली, और उसको पेमेंट चली जानी है। नहीं देखे, तो उसको कैसे हम उसको कैसे कॉन्सेप्चुलाइज करेंगे, ये मेरा एक क्वेश्चन है। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि ECL ने आना ही वहां पे है जहां पे ओवर ड्यू होना है। ठीक है ना। अगर फर्ज करें, मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि अगर एक कंटिन्यूस अमाउंट जो है वो आउटस्टैंडिंग में जा रही है, ठीक है ना, नॉर्मली उन्होंने एक लिमिट दी हुई है या कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट है, कंटिन्यूस एक लिमिट वो अवेल कर रहा है, तो उतनी अमाउंट के ऊपर तो आपको ECL लगाना पड़ेगा ना। और नॉर्मली इस तरह की जब लिमिट दी होती है ना, तो उसके ऊपर हम फिर जो सिंप्लीफाइड अप्रोच है वो नहीं लगाते हैं, फिर हम उसको उतने वाले पोर्शन को उठा के ना हम जर्नल मॉडल में ले जाते हैं। ये जर्नल मॉडल जो पुराना हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट नहीं, जर्नल मॉडल पुराना नहीं है, जर्नल मॉडल जो है उसी के ऊपर हम लेके जाएंगे ना। हाँ जी, जर्नल मॉडल में जो आपने लिमिट दी हुई है ना, जितनी जो कि बैलेंस रिकवर नहीं होता,
उतनी अमाउंट को आप उठा के जनरल मॉडल में ले जाएं और उसकी जो कंपनी है जो आपकी यानी एसोसिएटेड कंसर्न है उसकी फिर जो पेमेंट एबिलिटी है उसको आप चेक कर लें। ठीक अगर है सर पेमेंट एबिलिटी और मेरी जजमेंट ये कहती है कि वो पे कर देगा, मतलब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 180 डेज क्रेडिट लिमिट है और वो फॉर एग्जांपल 200 डेज है, मतलब बहुत ज़्यादा ओवरड्यू नहीं है, तो फिर मैं उससे कभी काम भी चला कभी सकता हूँ। भी आपकी एविडेंस जो है ना वो सब्सटेंस के बगैर नहीं होती है। ये पे कर देगा, ये सब्सटेंस होना चाहिए और सब्सटेंस ये होगा कि मैं उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है ना उसको मैं आइडेंटिफाई करूंगा। ठीक है ना, और उसके अकॉर्डिंगली मैं उसके ऊपर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट है, एक्सपोजर एट डिफॉल्ट है और जो मेरा लॉस गिवन डिफॉल्ट है उसको मैं क्वांटिफाई करूंगा एंड देन आई विल से कि अच्छा इसके ऊपर मुझे प्रोविजन रिक्वायर्ड है कि नहीं है। ऐसे नहीं है, सब्सटेंस तो होगा, सब्सटेंस होगा, सब्सटेंस के बगैर बात नहीं होगी। जी सर, Sir, in case of disposal of assets, थोड़ा सा ऊंचा बोले। disposal of assets में requirement है कि 5 million से exceeding assets की particular dispose करना है। माइक के अंदर थोड़ा सा बोले, आवाज नहीं आ रही। सर इन केस ऑफ जो डिस्पोजल ऑफ एसेट्स है 5 मिलियन की लिमिट है कि आपने एग्रीगेट बुक वैल्यू 5 मिलियन से एक्सीड करेगी तो उसके पर्टिकुलर डिस्पोज होंगे। ये जो 5 मिलियन की जो असेसमेंट करनी है ये क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन से, क्लास लाइन आइटम से होगी या इन एग्रीगेट टोटल जो फिक्स एसेट में डिस्पोजल्स होंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि इंडिविजुअल एसेट की बात हुई है। लेट मी चेक अगेन। इंडिविजुअल एसेट की बात हुई है। इंडिविजुअल एसेट, हाँ जी, इंडिविजुअल एसेट की बात, एग्रीगेट में तो बहुत खराब हो इन चुका। केस 5 मिलियन से लिमिट एक्सीड कर जाती है तो जितने भी 5 मिलियन से कम होंगे वो भी साइड 500,000 है मेरा ख्याल है। 5 आई थिंक जो लेटेस्ट है उसमें 5 मिलियन की अच्छा अच्छा, ठीक। एग्रीगेट में नहीं, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल पे। हाँ जी, सर अगर इन केस 5 से एक्सीड कर जाए लेकिन जो बिलो हैं वो भी फिर करने पड़ेंगे या सिर्फ जस्ट जो एक्सीड करेंगे? नहीं नहीं, जो एक्सीड कर रहा है वही, ओके सर। जो एक्सीड कर रहा है वही करें। सर सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो आपने कहा है कि बैलेंस शीट में कैपिटल रिजर्व को रेवेन्यू को क्लासीफाई करना है, हाँ जी, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है कि जो अनरियलाइज्ड फेयर वैल्यू गेन होती है थ्रू ओसीआई वो कैपिटल में क्लासीफाई होंगे? अच्छा, जो क्वेश्चन इनका है वो ये है कि IS1 के अंडर जो है कुछ आइटम्स जो हैं वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्लासिफाई होती हैं और कुछ आइटम्स जो हैं वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्लासिफाई होती हैं। तो जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आइटम जा रही हैं, आया वो सारे हमारे कैपिटल रिजर्व है? ऐसे नहीं है। अगर हम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की भी फर्दर बाइफर्केशन के देखेंगे तो वो दो तरह से है। आइटम्स दैट मे बी रीक्लासिफाइड टू P&L, आइटम्स दैट मे नॉट बी रीक्लासिफाइड टू P&L। ठीक है ना, तो ये जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की अंदर आइटम जा रही हैं डजंट मीन कि वो कैपिटल रिजर्व है, ये कतई नहीं है ऐसी बात। ठीक है, क्योंकि इवन कुछ आइटम्स जो हैं, जैसे फर्ज करें आपका जो फेयर वैल्यू गेन है ऑन जो फॉरेन ऑपरेशंस है वो आपका रिक्लासिफाइबल आइटम है। एक्चुरियल गेन लॉस जो होता है वो तो जाके रिटेन अर्निंग में ऐड हो जाता है, वो तो आपके डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का पार्ट बन जाता है। ऐसे नहीं है, ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जो भी आइटम जा रही है वो आपका कैपिटल रिजर्व, ऐसे नहीं है। हाँ, रीवैल्यू सरप्लस जाता है वो कैपिटल रिजर्व है, बट फेयर वैल्यू गेन जा रहा है वो कैपिटल रिजर्व नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जो है उसने रिक्लासीफाई होकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज हो जाना है और कुछ आइटम जो जाके रिटेन अर्निंग का पार्ट बन जाती है, ऐसे नहीं है। अच्छा, एक बड़ी मिसकंसेप्शन है वो ये है कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में शायद जो गेन या लॉसेज आते हैं वो अनरियलाइज्ड होते हैं। ऐसे नहीं है, रियलाइज या अनरियलाइज की कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। रिसेंटली इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने इसके ऊपर एक सब कमेटी बना दी है कि जो एक हार्ड एंड फास्ट लाइन ड्रॉ करे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम्स कौन सी हैं और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आइटम कौन सी हैं और डिस्टिंक्शन कैसे करनी है। करंटली देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट लाइन। There is basically the requirement of the IFRS that this item should be reported in profit or loss account and this item should be reported in other comprehensive income. This item should be reported under the heading items that may be reclassified to P&L or under the heading items that may not be reclassified to P&L. But there is no, you can say, hard and fast criteria that this is the item, the nature of the item that will be part of the P&L or other comprehensive income. ऐसी कोई बात नहीं। They have, you can say, constituted a body which will be identifying certain rules that how it can be identified that this is part of P&L, this is part of other comprehensive income. Currently, there is no criteria under IFRS. Only the requirement of the IFRS is saying this is your P&L item, this is your other comprehensive income item. सर इसी में अगर फॉर एग्जांपल एक रिजर्व क्रिएट किया है, थोड़ा सा ऊंचा बोले, मैं या तो जी जी सर, एक रिजर्व क्रिएट किया है बिल्डिंग की फ्यूचर में, मतलब बिल्डिंग की मेंटेनेंस के लिए,
फ्यूचर मेंटेनेंस के लिए। जी बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी प्लांट की आइटम है, तो ये फिर रेवेन्यू होगा या कैपिटल? नहीं, ये रेवेन्यू रिजर्व है आपके। इस तरह से जो आप रिजर्व क्रिएट करते हैं ना, जिनका ऑब्जेक्टिव आपका ये होता है कि आपने किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए उनको बनाया है, तो ये कोई ऐसी रिक्वायरमेंट भी आपसे नहीं है कि कल को उसी काम के लिए यूज होगा, आप उसको दोबारा चेंज भी कर सकते हैं। तो इट्स रेवेन्यू रिजर्व, नॉट कैपिटल रिजर्व। Even if major renewal is required, there is no, you can say, requirement under the act or any, you can say, standard. Basically what you want to say is, if there is a reserve maintained that this is our asset which is depreciating, and in the future we will be you can say using this reserve to purchase the asset, that will be asset replacement reserve, but the classification will not be capital reserve. The capital reserve under Companies Act is only that reserve which is not available for distribution in the form of dividend to the shareholders. So if, let's say, after 2 years the management say no, this is going to be our distributable reserve, so what you can say? Nothing. जी सर ये शरिया कंप्लायंट कंपनीज होती है, कैसे चेक होगा? थोड़ा सा ऊंचा बोले आप, मेरे मुझे समझ नहीं आती आदि। हाँ जी, शरिया कंप्लायंट कंपनी से ये कहाँ से चेक होगा कि वो कंपनी शरिया कंप्लायंट है या नहीं? ये जो है ना, जो पाकिस्तान में PSX है ना, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, उसका KMI इंडेक्स है, ठीक है, वहां से आपको ये शरिया कंप्लायंट कंपनीज की लिस्ट मिल जाएगी जो लिस्टेड है। थैंक यू। हाँ जी, I have a question, sir. Question either, sir. Sir, question देख लें। जी सॉरी सर, ये एक जनरल प्रैक्टिस है कि कंपनीज जो हैं वो डायरेक्टर जो हैं वो से ज़्यादा लोन देते हैं, लेते हैं। अब लोन फॉर्म डायरेक्टर जो होता है वो करंट में क्लासिफाई कर देते हैं ताकि उसकी जो अनवाइंडिंग है ना उसको अवॉइड किया जाए। तो इस केस में जो है क्या 2-3 साल में अगर वो लोन जो है रीपे नहीं हुआ तो उसे रिक्लासिफाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, जो है ना रीपेमेंट ऑन डिमांड, वो तो है। अब डायरेक्टर मांग नहीं रहा, उसका कवर लोग ले लेते हैं। बट अगर हम देखें तो जितने भी हमारी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं ना, वो सब्सटेंस ओवर फॉर्म के ऊपर बेस करते हैं। अब इकोनॉमिक रियलिटी ये है कि नहीं, ये शॉर्ट टर्म नहीं है, बट यू नो कि प्रैक्टिकली लोग इसको यूज कर रहे हैं कि ये ऑन डिमांड पेएबल है, but the same amount is paying, let's say, for last 3-4 years. What you can say? Nothing. Is payable but is not being paid. Is payable on demand, तो लोग क्लासीफाई करते रहते हैं, ठीक है ना। बट अगर आप सब्सटेंस या इकोनॉमिक रियलिटी की बात करेंगे तो आपको क्वेश्चन मार्क बनता है बीइंग एन ऑडिटर कि ये क्यों क्लासीफाई हो रहा है करंट में, जबकि आप इसको पे भी नहीं कर रहे हैं और वो डिमांड भी नहीं कर रहा, ठीक है ना। बट आई थिंक कि आपके पास इसके अलावा और कुछ नहीं कि रिप्रेजेंटेशन ले लें। What you can say? Nothing. ठीक है, बट मैं जो चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ वो और है, वो ये कि इकोनॉमिक रियलिटी उसकी ये है कि हमने उसको करंट में क्लासिफाई किया हुआ है। बेसिकली वो करंट लायबिलिटी नहीं है, बट इसको एस्टेब्लिश करना कि ये जी करंट ही है, आपका काम शायद नहीं है एज एन ऑडिटर। लेकिन सर पता चल रहा है ना 2-3 सालों से वो पे ही नहीं हो रही। yes, क्या करें? आप यू हैव द राइट कि आप उससे डिसएग्रीमेंट करें। IFRS की कंप्लायंस नहीं ना हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, यू कैन डिसएग्री, ठीक है ना। और नॉर्मली लोग ऐसे करते हैं, नॉर्मली नहीं, ज्यादातर ही करते हैं। हाँ, मतलब ऐसे ही है। अच्छा, एक सवाल है, एग्जेक्टिव डेफिनेशन में लिखा था कि बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट खत्म होता जा बिल्कुल रहा है, ऐसे ही है। क्या किया कंपनीज एक्ट में रिवीजन की रिक्वायरमेंट है जी अब कि होना चाहिए। अब तो बेसिक सैलरी 1979 के लॉ के साथ ही फौत हो गया। दूसरा सवाल है दूसरा सवाल है कि 3-4 कंपनी अगर मिलके कोई ऐसा इक्विपमेंट परचेज करके इंस्टॉल करते हैं, सर्वेलेंस इक्विपमेंट होता जी है, ठीक है, सर्वेलेंस 6 कंपनियों ने मिलके उसको सबने कंट्रीब्यूट किया। अब ये किस कंपनी की ओनरशिप में रहेगा, ये कैसे इसको डेप्रिशिएट किया जाएगा? देखिए, अगर तो वो कोई ऐसा एसेट है जो कि कंपोनेंट्स में है और वो कंपोनेंट जो है इंडिविजुअल कंपनीज के कंट्रोल में है, फिर तो इंडिविजुअल कंपनीज जो हैं उसके ऊपर उसको अलग-अलग रिकग्नाइज भी कर सकती हैं, अलग-अलग डेप्रिशिएट भी कर सकती हैं। अगर फर्ज करें जो है उन्होंने रिसोर्सेज पूल किए, तो फिर तो आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि ओनरशिप जो है वो किसके पास या कंट्रोल किसका है।
ठीक है ना, फिर तो उसके अकॉर्डिंगली एसेट को उसकी बुक्स में रिकॉग्नाइज करें। आइडेंटिफाइड नहीं है क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, लेकिन मिलेगा, इनडायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा उनको। देखिए तो और जो component मैं भी नहीं है। इसमें आपको एक दूसरा क्राइटेरिया भी देखना पड़ेगा कि IS 16 जब सेफ्टी इक्विपमेंट्स की बात करता है ना, तो सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स रिकग्नाइज भी नहीं होते हैं। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आया वो रिकग्नाइजेबल एसेट भी है कि नहीं है, क्योंकि IS 16 का जो क्राइटेरिया सेफ्टी इक्विपमेंट के लिए है ना, वो ये है कि सेफ्टी इक्विपमेंट जो है वो अगर इकोनॉमिक बेनिफिट्स को ऑफ द अदर एसेट्स इनहेंस करते हैं तो ओनली दैट कैन बी रिकग्नाइज। तो अगर वो इनहेंस नहीं कर रहा, ठीक है, तो फिर तो आप उसको रिकग्नाइज भी नहीं करेंगे। और ज़ाहिर है जिसके जितने इकोनॉमिक बेनिफिट्स इनहेंस कर रहा होगा, फिर ज़ाहिर है उसके अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा, बट इट विल बी मैटर ऑफ जजमेंट, ये इतना आसान नहीं होगा। अच्छा, तीसरी चीज ये ECL लगाना कोई जरूरी तो नहीं है फिलहाल? नहीं, ऐसे नहीं है। हम अभी तक जो है, चूँकि ECL ज़रा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, तो हम शायद उसको अवॉइड करने के लिए हर वक्त थोड़ी सी कोशिश करते रहते हैं। ऐसे नहीं है। ECL जो है बेसिकली जब भी आप IFRS ECL मॉड्यूल जो है, जो टेक्निकल जो फिर जो उसका नहीं, देखे मॉडल तो स्टैंडर्ड ने कोई नहीं दिया, स्टैंडर्ड ने तो उसके बेसिक गाइडलाइन दे दी है, मॉडल तो हमने डेवलप करना है खुद से, ठीक है ना, और उसके जो जनरल गाइडलाइंस है उनको सामने रखते हुए डेवलप करना है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड ने कुछ नहीं बताया कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, उसने एक जनरल गाइडलाइन दे दी है, पैरामीटर्स दे दिए, उसके नीचे उसने ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई कर दिए कि ये ऑब्जेक्टिव आपने अचीव करने हैं। अब आपने वो उसके अकॉर्डिंगली डिजाइन करना है, और जो भी IFRS कंप्लायंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है, दैट कंपनी इज रिक्वायर्ड टू, इवन प्रोविजन रिक्वायर्ड है या नहीं है, इट्स सेपरेट मैटर। पहले आपने ये देखना है कि मैंने रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड मीट की है कि नहीं की है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड तो ये है कि अगर आपने IFRS 9 अडॉप्ट कर लिया है या आपकी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, तो यू हैव टू डिजाइन कि आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ECL जो है या इम्पेयरमेंट लॉस जो है उसको इस IFRS 9 की गाइडलाइन के मुताबिक कैसे डिटरमिन करेंगे। वो आपका मॉडल ही है, बेशक वो सोफिस्टिकेटेड ना हो, बट अगर वो रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड या ऑब्जेक्टिव सेट बाय द स्टैंडर्ड मीट कर रहा है तो ठीक है। हाँ जी, मैं वही कह रहा हूँ कि वो अल्टीमेटली घूम फिर के लोग उधर आ गए कि मौका मिल गया जी। एनी अदर क्वेश्चन जी? फैसलाबाद वाले तो चले भी गए। हाँ जी, मैं कहा फैसलाबाद ऑफिस वाले तो चले भी गए लंच ब्रेक पे, और अच्छा, आपको तो अच्छा। मैं पर्ची भी नहीं दे सकती। कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम, लंच लेट हो सकता है 10-15 मिनट। अगर है कोई एनी अदर क्वेश्चन? मुल्तान ऑफिस, डू वी हैव एनी क्वेश्चन? नो। Not even on- तो आई थिंक सबको भूख लगी हुई है, तो मेरा ख्याल है कि वाइंड अप करते हैं जी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।